Good morning everyone. Let's continue with the remaining part of forces of change. Now we will talk about the external forces of change. ऐसे कौन कौन से external factors हैं जो हमें force करते हैं change होने के लिए. Okay. When we talk about external forces of change, what we actually talk about? We are talking about globalization. क्या ग्लोबलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की कोशिश करता है? डू यू थिंक द कंपटीशन दैट यू हैव इन डोमेस्टिक मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल मार्केट एंड द कंपटीशन दैट यू हैव इन नेशनल मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस. सो ग्लोबलाइजेशन आल्सो impacts and tries to bring the change. Globalization and impact. This is how it does impact. What we should do or what should be done? We have to accept the change. Otherwise, we would be, we would die with competition because of the marketing strategies which the good companies does. Okay. So globalization एक external factors है which tells us to change the working pattern, workforce diversity. See, अगर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है which is in the rural part of Maharashtra, then what would be the employees or what type of employees we would see? Only Maharashtrians we would see. लेकिन अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीटअप करना चाहते हैं, ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, then we have to include people from various background, caste, religion, customs. If you want to have business in America or Africa or Japan, we also need to have employees. तो workforce diversity, ये MNCs जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज MNCs, उसमें workforce diversity होता है. वो किसी एक रिलीजन, एक पर्टिकुलर रीजन से नहीं आते लोग अलग अलग रिलीजन और रीजनल बैकग्राउंड से आते हैं. So that is also one of the forces, external forces which tells the organization that it is the time to change. आप जो पॉलिसीज बना रहे थे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एक स्पेसिफिक रिलीजन को कैटर करता है, वो काम नहीं आएगा. अब ऐसे पॉलिसीज बनाना होगा जो सारे रीजन और रिलीजन को कैटर करे. मूविंग टू द नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. अगर मार्केट में कोई एक नया मशीन आया, नया टेक्नोलॉजी आया, एडवांसमेंट हुआ, सो विल इट इम्पैक्ट द ट्रेडिशनल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? यस. सो अनदर एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच विल टेल द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई तुम अपना प्रोडक्शन पैटर्न चेंज कर दो. इफ यू डोंट चेंज देन इन दैट केस पीपल विल ऑप्ट ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और आपका मार्केट लूज हो जाएगा. मार्केट कंडीशन, मार्केट में कोई एक नया इनोवेशन आया, मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आया, मार्केट में कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऐड हुए, सो वी हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट. फॉर एग्जांपल, पहले व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट डिलीवरी, तो दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता था कि भाई होम डिलीवरी बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं. अभी ऑल कंपनीज प्रोवाइड होम डिलीवरी, इजंट इट? अभी बहुत सारे कंपनीज लाइक वी हैव Zomato, Swiggy, then we have Zepto, we have Delivery, we have Bronzo, Unzo. What exactly it is? The delivery partners. This is a change in the marketing behavior. अभी market conditions are different. So अगर हमने इसको strategize नहीं किया, हमने भी अगर Swiggy, Zomato के साथ टाइप नहीं किया, what will happen? We will lose our customers. And the companies which are providing free delivery services, they will win. Okay. Economic factors also impacts the organization and also forces organization to change. देखो, और अगर economy is in the growth stage or boom stage, okay, wherein everything is happening, wherein everything is in progressive in nature, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कंपनी कैन गो फॉर एक्सपांशन. दैट इज अ चेंज. अभी कंपनी belongs to a country जो इकोनॉमी इज इन डिप्रेशन, इकोनॉमी इज इन रिसेशन, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, काम के लिए पैसा नहीं है. ओके, तो उस केस में काम ही नहीं है तो पैसा कहाँ होगा? ओके, तो उस केस में कंपनी कैन नॉट थिंक अबाउट रिसेशन, इट हैज टू थिंक अबाउट डाउनसाइजिंग, कि निकालो जितना हो सके एम्प्लॉयज को निकालो. So that is nothing but
economical factor which forces organization to change. Socio-economic background, social change. अगर किसी एक, have you heard about demographic composition? It impacts the change. Abhi, for example, in America, when we talk about equality, but there is a racism चलता है वहाँ. White people, black people ऐसा बोलते हैं, because that is their social structure. अगर सोचो white people ज़्यादा हो गए in case, then what will happen? Well, in that case, what will happen is you have to think as per the demand, needs, and requirement of them. Well, I do not support racism. There should not be white, black people that we should talk about, neither we should discuss. But just an example, this is the reality. एक particular religion का अगर numbers बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से if there is a social change in that particular demography, in that particular region, तो उस जगह का needs, demands भी उसी तरीके से बदल जाता है. Example, as we could see what is happening in our neighbor countries, this would be the live example, lessons to learn as well. So, by the way, this is nothing but forces of change, which tells you to change, internal and external forces of change. Thank you for listening. Bye for now.